Namaskar दोस्तों, good evening friends. I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly and familiar endocrinologist. And you are watching Dr. KK's Med Talks, Mondays with Dr. Sanjay Kalra. आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का 805वां 805th एपिसोड है. Let's have the headlines for today. Now, the NHA has introduced a new system to grade the performance of hospitals empaneled under the APMJ scheme. Cardiologists have alerted us that there is an increased risk of heart attacks and also stroke during winter. तो बच के रहें, अपना ख्याल रखें. In the Chinese province of Henan, official sources have suggested that 90% of all people are infected with COVID-19. And इसको मद्देनजर रखते हुए, in the face of this, the European Union has strongly urged COVID testing for all arrivals from China. एयर पोल्यूशन पूरी दुनिया में फैल रही है, पूरे इंडिया में फैल रही है. एंड इन कैलकाटा द एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज टर्न्ड वेरी पुअर एज द टेम्परेचर डिप्स एंड डॉक्टर्स हैव रेज्ड अ हेल्थ अलार्म. अब हेल्थ अलार्म तो बहुत सारी चीजों का है, तो लेट्स सी व्हाट टॉपिक वी आर गोना कवर अगेन टुडे. हमने कई बार ओबेसिटी पे बात की, मोटापे पे चर्चा की, बट बार बार रिक्वेस्ट आ रहे थे ऑन पब्लिक फोरा एज वेल एज पर्सनली कि ओबेसिटी के बारे में दोबारा बात करें. सो दैट्स व्हाट वील टॉक अबाउट टुडे. वील टॉक अबाउट ओबेसिटी एंड वील ट्राई टू मेक इट सिंपल. आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर नरेश डैंग. ही इज अ सीनियर फिजिशियन एट मैक्स बालाजी हॉस्पिटल इन पटपरगंज इन न्यू दिल्ली and he'll join us shortly. उनसे बात करेंगे. उतने में सबको वेलकम करते हैं. We welcome स्वप्ना जैन जी, who is an advocate in for healthy living with obesity. सत्येंद्र सिंह जी, अर्ना त्यागी मैडम एंड अवध किशोर राठौर जी. अब कई बार हम ओबेसिटी की बात कर चुके हैं और सब एक्सपर्ट भी हैं यहाँ पे. स्वप्ना जैन मैडम तो शी लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, बट लेट्स revisit something and let's talk about newer aspects of obesity. नए पहलुओं की बात करते हैं. ओबेसिटी बहुत सिंपल वर्ड्स में मतलब वजन ज्यादा होना. हम कैसे चेक करते हैं? द इजीएस्ट इज टू चेक द बॉडी वेट, बट बॉडी वेट अलोन वोंट हेल्प. सपोजिंग आई एम 10 years old, सपोजिंग 20, सपोजिंग 70, बॉडी वेट इज डिफरेंट फॉर ईच पर्सन. तो अकेले बॉडी वेट बताने से कि इस व्यक्ति का वजन 50 किलो है या 70 किलो है, दैट डजंट गिव इनफ इंफॉर्मेशन. एज पे भी डिपेंडेंट है. दूसरा हाइट पे. सपोज आई एम 50 years old, मेरा वेट है 70 kg, बट ये तो किसने पूछा ही नहीं कि मेरी हाइट 5 फुट है या 7 फुट है. तो अगेन इट मेक्स अ डिफरेंस. एंड अनदर थिंग इज जेंडर. मैं व्यक्ति हूं, मैं महिला हूं या पुरुष हूं, दैट मेक्स अ डिफरेंस ऑन माई एवरेज, ऑन माई नॉर्मल वेट. तो दैट मीन्स वी नीड टू फैक्टर इन एज एंड जेंडर एंड हाइट व्हेन वी आर असेसिंग वेट. तो सबसे सिंपल सरल तरीका एडल्ट्स में जो यूज होता है, दैट इज कॉल्ड बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स. दैट इज वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर. वेट इन केजी, हाइट स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर. और इसके साथ हम हाइट वाला पार्ट एटलीस्ट एड्रेस कर लेते हैं. क्योंकि वेट और हाइट ज्यादातर इकट्ठे चलते हैं, तो जेंडर सेम है. I mean, it is a gender neutral kind of an index. जेंडर चाहे जो भी हो, बीएमआई का नॉर्मल एबनॉर्मल सेम माना जाता है. पर एक और बीच में फैक्टर आता है, दैट इज एथनिसिटी. तो ये देखा गया कि जो वेस्ट से लोग हैं, जो अंग्रेज मूल के हैं या कॉकेशियन मूल के हैं, उनका बॉडी मास इंडेक्स अलग होता है और हमारा अलग होता है. रीजन ये भी देखा गया है इसको अलग अलग करने का कि हम लोग जो इंडियंस हैं, relatively lower BMI पे. And we welcome Dr. Naresh Dang. Warm welcome, Dr. Thank you. Dr. Dang को दोबारा इंट्रोड्यूस करते हैं. He is a senior consultant physician at Max Balaji Hospital in Patparganj, New Delhi, and he runs his independent clinics in Kaushambi and Krishnanagar, which are approved as a diabetes specialty clinic by the Endocrine Society of America. He has also served as the former coordinator of the Max Hospital Medicine Department and is founding member of an organization called United Smiles Foundation. And he specializes in metabolic diseases, including obesity. So, Dr. Sir, warm welcome. बहुत सारे लोग लॉकडाउन में यूनाइटेड स्माइल्स के बारे में तो बताएं. This brings a smile to everyone. Space.
Yeah, it was actually inspired by my daughter who went to Romania many years back. And there it was an orphanage where she worked, and she was giving smiles to those children. And she came back and said, Papa, can we start something? And that is how we started. And we work with the underprivileged people and try to give them happiness. इसी पे ही टॉपिक आ रहा है एंड अवध किशोर राठौर जी, रामफल सुरेटिया जी एंड अंशु सिंह जी हैव आल्सो लॉग्ड इन। तो सवाल पूछा जा रहा है कि इज ओबेसिटी अ डिजीज एंड Yes. व्हाइल वी आर लिविंग विद ओबेसिटी कैन वी स्माइल? तो पहला सवाल पहले, इज ओबेसिटी अ डिजीज? Yes, obesity is a disease, and you see, I want to take you back to history of many diseases. Let's say hypertension. If you go back to the history of hypertension in 1930s, if someone was trying to treat hypertension, the most people would say, "Oh, he's a fool. He's trying to treat a physiological phenomena." And in 1945, the big three from the Second World War, Roosevelt, Churchill, and Stalin, all three had high blood pressure. They were all having 160, 110, 170, 100 types, and they were not on any antihypertensives. Partly because we didn't have good medicines to treat that disease. So over the years, then once we had better medicines, we realized treating blood pressure was possible, and we, started realizing it as a disease and started treating it. Similarly, obesity, we thought it was just a lifestyle phenomena. Being obese was considered all right, and in North India, in Punjabi, they say कि अगर वो if he is not little overweight, they say वो बड़ा कमजोर है. That is what they say. But over the years, we realized that obesity is the gateway to diseases. It is a disease. It in itself causes increased morbidity, mortality, and leads to many other diseases. We'll come to that in a while. So, yes, obesity is a chronic disease. It has been recognized by WHO and by various health organizations all over the world. Even our country, we have realized that obesity is a disease. That is why we are going to accept some of the treatment modalities that are going to come in next few months to few years in our country also. So yes, obesity is a disease. I would because it causes increased morbidity, mortality, and leads to many other diseases. So I say it's a gateway to other diseases. Yes. So it is a disease itself and it is a gateway to other diseases. And जो एक और चीज जो डॉक्टर डैंग ने कही कि वो सोशल परसेप्शन की बात है। पहले ब्लड प्रेशर को नॉर्मल और अच्छा माना जाता था। अब पता चलता है कि ब्लड प्रेशर एक बीमारी है बिकॉज इट कॉजेज अदर डिजीजेस एज वेल। एंड ऐसे ही ओबेसिटी में ट्रेडिशनली सोचा जाता था कि अच्छी चीज है, बट एक्चुअली इट्स नॉट अ गुड थिंग। सर, वी हैव विद अस डायनामिक फिजिशियन फ्रॉम न्यू दिल्ली, डॉक्टर उत्सव साहू। तो डॉक्टर साहू पूछते हैं, हाउ डू यू मोटिवेट obese people to lose weight? And he would like you to speak from your experience, your expertise. He Yes. says that in our practice, it's very difficult to make people realize that obesity is a disease. Yeah. So to be honest, till few years back, I would say even I was callous. I'll be very honest with you. But with each passing year, with each slight increase in my knowledge and awareness about obesity, my commitment to treat it has increased. And now, when I write a diagnosis, I write obesity as one of the diseases. If I find that a patient is obese, I do write as one of the, diabetes, hypertension, obesity, everything comes there. And once I'm convinced that obesity is a disease, I do talk to my patients. I do tell them that yes, you are little overweight. I mean, I'll not use the word obesity straight away, but I do go very candidly and tell them that yes, they are little overweight, and if they will control it, it will help their other things, other metabolic parameters, diabetes, hypertension, and even they will have better quality of life. And believe me, most of my patients are aware that they are overweight or obese. Talking, saying obese sometimes is little offensive, so we can, skip on the semantics when we are talking to our patients. We can just tell them about their weight issue, talk about their weight issue rather than saying that, oh, aap bahut mote hain, something of that kind. Sometimes it hurts our patients. So you talk to them, and then they are really ready to do work on it. And together we form a team, and gradually we get to the point of even treating obesity. And those who ये are
morbidly obese, they are definitely ready to treat themselves anytime. Yes. आपने ये चीज कही, टुगेदर वी फॉर्म अ टीम, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। एक तो आप ये चीज कह रहे हैं कि अर्लियर आई वाज नॉट सो focused on this, now I've begun doing it, which means we are evolving as scientists, as clinicians, we are evolving, so now we begin doing it. दूसरा आपने कहा मैं मरीज को इन्फॉर्म करता हूँ, यू इन्फॉर्म देम यूजिंग वर्ड्स विच आर नॉट हर्टफुल। तो जो भी Yes. मरीज की लैंग्वेज हो, जो भी उनका डायलेक्ट हो, या उनकी सोच का तरीका हो, यू फिगर दैट आउट। एंड फिर आपने Yes. कहा टुगेदर वी फॉर्म अ टीम। सो Yes. लेट्स टॉक अबाउट दीज वन बाय वन। केदार जोशी जी लॉग्ड इन है, हमारे बहुत एवर यूथफुल यंग सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं, एंड जोशी जी को हैप्पी बर्थडे कहेंगे, वन डे डिलेड। Happy birthday, So, sir. yep, happy birthday from all of us to Kedar Joshi ji. And let's do these one by one. So let's go from the back. Together we form a team. इसका क्या मतलब होता है सर? ऐसा है, ओबेसिटी मैनेजमेंट फिजिशियन अकेला तो कर नहीं सकता। मेन प्लेयर इन दैट, सेंटर फॉरवर्ड जो है हमारा, वो मरीज है। जितने भी बाकी लोग हैं, डाइटिशियन हो, मैं हुआ, साइकोलॉजिस्ट हुआ, जो भी इन्वॉल्व है उसमें, हम सब उसके, वी पास द बॉल टू हिम एंड ही इज द वन हु हैज टू स्कोर द गोल. So patient is the main pillar, if you ask me, and we help him, we guide him, we hold his hand, we teach him, and even sometimes spend a little more time, so that, hand holding. And once we get him out of his this thing, once you get the weight down, then he feels very happy and very confident. We seem to have lost Dr. Dang, but ये टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। टुगेदर, तो टुगेदर मीन्स हम और जो पर्सन लिविंग विद ओबेसिटी है। डॉक्टर डैंग इज बैक विद अस, कैरी ऑन सर। So we basically form a team, and we handhold him, we help him, we guide him, and once he starts losing weight, he feels happy, and we are with him. His happiness and our happiness is together, and it has to be a very close team effort in which patient informs you about his weight, about his activity, and you take the patient out of that inertia that patient has had for years and years. So it is actually a team effort, and patient is the main center forward in that. तो द पर्सन लिविंग विद ओबेसिटी इज द पर्सन जिनको लीड करना है, और डॉक्टर का काम है हम सफर का काम करना। तो हम उनके साथ चलें, और अगर कभी लेजी हो, थोड़ा सा पुश करना हो, तो उन्हें धक्का दें थोड़ा सा, हाँ, या बिल्कुल सही। सही रास्ता दिखाएं। बट चलना हाँ, उन्हीं को ही पड़ना पड़ेगा, हम रास्ता दिखा सकते हैं। अ, जोशी जी एक दवाई की बात कर रहे हैं, वील कम टू दैट लेटर। डॉक्टर डैंग, एक एक तो था फॉर्मिंग अ टीम टुगेदर, दूसरा आपने कहा था यूजिंग द राइट लैंग्वेज, लैंग्वेज विच इज नॉट हर्टफुल। तो ये तो यस। गीता में भी लिखा हुआ है, इसका भी वर्णन कृष्ण भगवान करते हैं कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें, ऐसे शब्द इस्तेमाल करें जो ट्रूथफुल भी हों, मगर दूसरे को हर्ट ना करें, तंग ना बिल्कुल करें। और जो भी हमारी भाषा है वो सुकूनजनक होनी चाहिए, सात्विक सही। होनी चाहिए। ट्रू। Can you give some examples, Dr. Naresh, from practice? Maybe first examples of hurtful language, which maybe we use, अनजाने में मैं इस्तेमाल करता हूँ, कोई और करता हो। यस यस यस। अब जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया, 160 किलो, 169 केजीज का था। तो अगर मैं फाउल लैंग्वेज यूज करना चाहता तो मैं कहता कि अरे तुमने ये क्या किया, तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो, तुम पता नहीं क्या क्या खाते हो, तुम अपनी सेहत खराब कर रहे हो। इट कुड हैव बीन अ डायरेक्ट assault on his persona. But the way I approached him, he came to me, he came with diabetes. And so I asked him, do you think this weight of yours is bothering you? And do you think we can do something about it? And he immediately said, yes, sir, it is bothering me for years, but I am unable to help myself. So it is very important, the kind of language you use. So then you can say, then you can go into the history of diet history and other histories. But before you go, it is taking a consent from the patient in a manner in which patient doesn't feel offended. So I think we going to discuss the 5 ways of obesity, or should I go straight away करें to सर, 5 ways? कैरी ऑन। सो यहाँ पे कीवर्ड आ रहे हैं, पेशेंट शुड नॉट फील ऑफेंडेड एंड वी शुड टेक द कंसेंट ऑल्सो। तो Yeah. सही तरीका बताएंगे सर? लेट्स टेक 2 or 3 एग्जांपल्स
या सो पहली चीज तो यह है 20 कि ईयर ओल्ड आस्क. गर्ल. हाँ, सॉरी से एग्जाम्पल्स एक एक करते हैं सर, एक एक या करके करते हैं. तो हाँ हाँ हाँ. एक तो हो गया 20 साल की लड़की who has just gone to college and she has her यस own fears, her own concerns. And यस फिर एक मे बी 50 साल के बिजनेसमैन लेते हैं. यस Again, his different fears and concerns. So let's go one by one. तो अब हम डॉक्टर हैं, हमारी ओपीडी में कोई 20 साल की लड़की आई, या वी आर जस्ट पार्ट ऑफ सोसाइटी. मेरे गली में, मेरे कूचे में 20 साल की लड़की है who's over 8. How do I begin speaking with her? यस. तो सी ऑल मेरे पास अगर 20 साल की लड़की आती तो मैं कहता हूँ बेटा आपको लगता है पहले मैं पूछूंगा आप कैसे हैं एंड ऑल दैट. एंड मैं ये भी पूछूंगा कि आप कैसे मेरे क्लिनिक में कैसे आए. हो सकता है वो किसी और डिजीज के लिए आई हो. मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो खांसी जुकाम के लिए कोई आया या किसी और चीज के लिए आया. तो देन आई विल से कि डू यू थिंक कि क्या आपको लगता है कि हमें आपके वेट के बारे में भी कुछ करना चाहिए. डू यू थिंक वी कैन डू इट टुगेदर समथिंग. एंड मोस्ट ऑफ देम आई रियलाइज्ड are wanting to do something about it. So once, and then they said, "Oh, we saw on your board that you are a weight management specialist also. So can you help me?" And so you form a relationship in which there is trust and mutual understanding that yes, she is ready and you are ready. Then only you can do it. So you have to take a consent. And I usually call these, So Dr. Naresh, we've lost him again. But देखो वो क्या क्या कह रहे हैं. First, take a हाँ, consent. हाँ, yeah. पहले तो आस्क करें, पूछें. या कैरी ऑन हाँ, सर. और बच्ची है तो उसको आप बच्ची करके बुलाएं ताकि उसको लगे कि एक मेरा वन सीनियर गाय इज देयर टू हेल्प मी एंड ही इज नॉट बीइंग ऑफेंसिव अबाउट इट. सो यू हैव टू डू दैट. दैट इज द वे. अगर ये जैसे 20 साल की लड़की है, 50 साल के बंदा है वो और भी जरा मैच्योर है बट उसकी आदतें भी पक चुकी होती हैं. उसको भी आप तरीके से बोलते हो कि भाई देखो आपको अब डायबिटीज आ गई है, हाइपरटेंशन आ गया है, और देखो ये वेट भी है, और अगर हम वेट कम करेंगे तो आपकी डायबिटीज इंप्रूव हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर इंप्रूव हो सकता है, कोई लोग ब्रीदिंग डिफिकल्टी से आएंगे, कोई ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से आएंगे. तो उनको भी आप बोलोगे कि भाई अगर हम वेट भी कम करेंगे तो वील बी इवन बेटर ऑफ. व्हाट डू यू से अबाउट इट. ही सेज यस आई एम रेडी. बट इट इज सो he'll say कि मैं ये ट्राई कर चुका, वो ट्राई कर चुका. देन यू से कि लेट्स ट्राई समथिंग मोर एंड लेट अस मे बी वी कैन बी मोर कमिटेड दिस टाइम. देखते हैं इस बार और कोशिश करते हैं और कमिटमेंट से करते हैं और लग के करते हैं. तो सो पेशेंट्स डू एग्री एंड दैट इज हाउ यू स्टार्ट. सो दैट इज द आस्क पार्ट ऑफ इट. तो पूछें, कंसेंट लें, एक्सप्लोर करें. और यदि मान लो ये चीज़ आती है कि मैंने सब कुछ कोशिश की है, तो और एक्सप्लोर करें. यू फिश एंड जी यू सी, कैन वी हेल्प यू इन एनी अदर वे. जी सर एक सवाल आ रहा है रेखा मैडम से. रेखा जी कह रही हैं कि आई एम 61 ईयर्स ओल्ड. या माई हाइट इज 4 फीट 10 इंचेस. तो इसको हम 145 सेंटीमीटर गिनते हैं. एंड माई वेट इज 70 kg. तो जनरल तौर पे हाउ डू आई फिगर आउट कि मेरा वेट ज्यादा है या कम है, विदाउट एनी कैलकुलेशंस और विद सिंपल कैलकुलेशंस. एंड प्रॉपर कैलकुलेशन से मैं कैसे करूं? देखें वैसे तो डाइट हाइट एंड वेट चार्ट्स अवेलेबल हैं. अगर आप कैलकुलेशन ना करना चाहें तो हाइट एंड वेट चार्ट्स देख सकते हैं. स्टैंडर्ड हाइट एंड वेट चार्ट्स नेट पे अवेलेबल हैं. और अगर एक मिनिमल कैलकुलेशन करना चाहें तो वेट इन केजी बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर आप देखें. उसको बीएमआई बोलते हैं. अब बीएमआई का ये है कि बीएमआई हमारी कंट्री में जो है बीएमआई के कट ऑफ थोड़े कम हैं. हमारी कंट्री में 23 से 24.9, 23 to 4.9 इज ओवरवेट. 25 to 29.9 is obesity grade 1. And so 25 के beyond obesity शुरू हो जाती है. फिर obesity के 3 grades हैं, grade 1, grade 2, grade 3. तो 25 to 29.9 is obesity grade 1, 30 to 34.9 is grade 2, and 35 onward is grade 3. 50, beyond 50 it is super obesity. सो बेसिकली बीएमआई से पता लगता है. दूसरी चीज एक बड़ी सिंपल चीज है वेस्ट सर्कमफ्रेंस. अगर 80 सेंटीमीटर से ऊपर इंडियन वुमेन की वेस्ट सर्कमफ्रेंस है तो दे आर एटलीस्ट सेंट्रली ओबीस. और मेल की अगर 90 सेंटीमीटर से ऊपर है तो ही इज ऑल्सो सेंट्रली ओबीस. और थर्ड चीज है वेस्ट हिप रेशो. और अगर वुमेन की 0.8 से ऊपर है और मेन की 1 से ऊपर है तो दैट इज अगेन सेंट्रल ओबेसिटी. सो सेंट्रल ओबेसिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीएमआई
because people who have more, central obesity are more prone to diseases, be it liver disease, cardiovascular disease, hypertension, atherosclerosis, and other complications. So central obesity को देखने के लिए waist circumference एक बहुत ही simple तरीका है. Around your umbilicus नाभि के पास अपना इंची टेप लेके आप measure करें और 90 से ऊपर for males and 80 for females is in itself a good idea of central obesity. सीमा जी लॉग्ड इन है कैलकाटा से. मैडम कह रही हैं दैट बाय रिड्यूसिंग वेट वन कैन improve the quality of life. And when you help someone lose weight, you are actually transforming their lives. And Madam is speaking from experience because she lost 20 kg of weight herself. And now she is inspiring others to lose weight in a safe manner. तो एक तो आपको Yes. ग्रीट कर रही हैं वो. रेखा जी भी हैप्पी हैप्पी बर्थडे कर रही हैं केदार जी को. तो केदार जोशी जी हैप्पी बर्थडे. And sir, greetings for you from Vinayak Sharma ji and also Dr. Amol. Dr. Amol is based in Mumbai. He is a Yeah. diabetes and metabolism specialist. तो वो पूछ रहे हैं कि सर अभी इलाज पे तो हम नहीं पहुंचे, यू आर गोइंग टू स्पीक अबाउट दैट, पर जब हम डायबिटीज का इलाज करते हैं ओपीडी में तो उसका ओबेसिटी से क्या लेना देना होता है? Bilkul. Diabetes, we type 2 diabetes in particular, we know is associated with obesity, and there is 90% or even more correlation. So, most diabetics are obese. And in the recent ADA in New Orleans, uh, they discussed whether weight or should it be glucocentric or should be weight centric approach. So at least in early diabetics, all diabetics must lose weight. But in early diabetics, if you reverse the weight, you can put diabetes into remission. So one is intensive lifestyle modification must be told to all our diabetic patients. We must spend 5 minutes extra each time our patient or diabetes comes. Either we spend or our educator spends. I think those 5 to 10 minutes on lifestyle modification for each diabetic patient are more important than the medicines that give, or at least equally important. And then once we put them on medication, in today's era, we should put them on medications that will cause some weight loss also. So I would say metformin still remains one of the backbones. And then SGLT2 inhibitors or GLP-1 receptor agonists, depending on patient's affordability, should be given to whoever can afford those drugs. तो जो डॉक्टर डैंग कह रहे हैं, एंड आई एम वेरी श्योर एवरीवन इन द पैनल विल एग्री, बिकॉज सीमा जी हैं एंड वेलोर से स्वप्ना जी हैं, दे विल एग्री विद द सेम थिंग. जो आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि दवाई इंपॉर्टेंट है, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. एंड विदाउट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन द मेडिसिन विल ऑल्सो नॉट वर्क इन डायबिटीज. सर, अंशु सिंह मैडम हैं, शी इज 55 years young. Her weight is 72 kg. Her height is 160 centimeter, 5 feet 4 inches. तो वो Yeah. कह रही हैं, I am fit. Do I need to take medicine for obesity? So you are what is called as metabolically healthy obese if you don't have any complications of diabetes, hypertension, etc., etc. But even metabolically healthy obese people are at higher risk of uh, comorbidities, and even lifespan is decreased a bit in obese people. So what you really need to start with is lifestyle modification. And going by the guidelines, first you will try lifestyle modification, and later you can consider medications which are safe. And there are many medications which are safe. But I would say you would be first a candidate for lifestyle modification, which would mean good diet control, sleeping in time, walking 10 to 12,000 steps a day, and taking less stress. The five S's that ESD talked about this year were great. Less sugar, less salt, steps 10 to 12,000, less stress, sleep in time, and eat healthy. So, and calorie restriction, I would say. So to start with, you would be candidate for these things, and later medication can be considered if you want to achieve your ideal body weight. Yes. Swapna Jain ji has also helped herself lose weight with lifestyle modification. She says, I agree that lifestyle modification is more important. दोनों important हैं. सर अली नज़ाकत जी की तरफ से आपको सलाम. अनामिका नु जी ने लॉगिन किया है. एंड सीमा जी पॉइंट आउट कर रही हैं that you can use food as a medicine.
अगर आप सही खाना खाएं, वो भी एक दवाई का काम करती है। और मिश्रा जी एंड निर्मला गुप्ता जी की तरफ से आपको राम राम है। अभी क्वेश्चन आ रहा है सर फ्रॉम सत्येंद्र सिंह जी, दैट इज एनी लिंक बिटवीन हाइपर एसिडिटी एंड ओबेसिटी? Yes, hyperacidity and obesity can be linked because obesity also leads to GERD, gastroesophageal reflux disease. वहाँ पे हमारा हाइडस hernia होने का डर रहता है, थोड़ा सा स्फिंक्टर esophageal sphincter lax हो जाता है, तो एसिड ऊपर जाता है, तो एसिडिटी हो सकती है ओबेसिटी में, और वेट लॉस से उसमें फायदा भी होता है. So yes, they are linked. Dr. Pradeep Raval from Ujjain in Madhya Pradesh has joined us, and so is Vinayak Sharma जी. सर एक और क्वेश्चन आ रहा है, आपने अभी बात की थी स्ट्रेस की, स्लीप एंड स्ट्रेस, तो Yes. व्हाट रोल डू स्लीप एंड स्ट्रेस हैव इन ओबेसिटी? Oh, they are very, very closely interlinked. One, sleep 7 to 9 hours, preferably in a right circadian rhythm, is very important. Because if you don't sleep well and if you don't sleep properly, then a lot of stress hormones get released, and your appetite goes up. You start developing insulin resistance also. So it is a multi. It hits you at multiple things. Your appetite goes up. You start eating more. Sometimes binge eat at night, and also because of lack of sleep, insulin resistance goes up, and even diabetes, etc., can be precipitated. Even cardiovascular disease can be precipitated to some extent there because of the inflammatory process that will set in if you are sleeping in improper time and sleeping too less or too much. Number two, stress. Again, stress is very, very important because people do a lot of stress eating. And in this stress, there are many disorders. Uh, so a lot of people will just binge on something and not even realize that they have eaten so many calories. So stress and sleep are very important. Yes. विन्नी जोगलेकर जी हैज जॉइंड अस, मैडम इज अ न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम बैंगलोर, एंड सर आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं फ्रॉम डॉक्टर एन एस शारदा सर. सर इज अ सीनियर फिजिशियन इन अहमदाबाद. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. डॉक्टर शारदा सर से पूछेंगे सर, इन एन illustrious career which is now 5-6 decades now, what changes have you seen in obesity management? And Vinny ji से पूछते हैं, any challenges that you face with nutrition, with motivating people to follow the right nutrition? उतने में सर सीमा जी का कमेंट आ रहा है फ्रॉम कोलकाता, गॉड हैज गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी टू गाइड पीपल, टू इंस्पायर पीपल फॉर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, Yes. एंड डॉक्टर Yes. नरेश आल्सो डज दैट. देयर बिलीफ इन सीमा जी एंड देयर ओन endeavors, so you believe in the person who is helping you. अपने हमसफर पे यकीन रखें कि वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, मगर अपने पे भी यकीन रखें, बी कॉन्फिडेंट. दैट पॉइंट इज वेल टेकन सीमा जी. हैज हेल्प देम अचीव देयर टारगेट्स, चाहे वो शुगर का टारगेट हो या कोलेस्ट्रॉल या लिवर का, और तबीयत भी ठीक हो गई है. एंड जो 10 गोल्डन रूल्स हैं लाइफ के, व्हिच इज बेसिकली इट्स ऑल सिंप्लिसिटी, जैसे बात कर रहे हैं, तो उससे एक्चुअली यू कैन अचीव गुड हेल्थ. सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड फाइंड द राइट पार्टनर. गणेश अंबोरे जी भी हैं. डॉक्टर उत्सव फिर पूछ रहे हैं सर, मेडिसिन, एंड उससे पहले केदार जोशी जी ने कहा था कि आज की हिंदुस्तान के समाचार पत्र में एक एडिटोरियल लिखा गया सेमाग्लूटाइड पे, तो ये क्या चीज है? तो इफ यू कुड टेक दीज क्वेश्चंस टुगेदर, Yeah. व्हाट आर द मेडिसिन्स दैट आर अवेलेबल फॉर ओबेसिटी मैनेजमेंट? So in India, uh, एक सबसे बेसिक मेडिसिन ऑर्लिस्टैट अवेलेबल है, जो कि एक लाइपेस इनहिबिटर है, और ये क्या करती है कि फैट अब्जॉर्प्शन को कम करती है. तो इससे ग्रीजी स्टूल पास होगा, और पेशेंट इस दवाई से अगर आप दिन में 3 बार लेते हैं विद ईच मील, तो you can start with 60 mg 3 times a day, then go up to 120 mg 3 times a day. तो इससे आप 5 to 8 kgs वेट लॉस अचीव कर सकते हैं along with lifestyle modification. उसमें ये है कि sometimes that greasy stool and acceptance of patients is little uh, challenging, because कभी-कभी you will have greasy pant or something, but it's a good drug, it's a very safe drug, it's a time-tested drug, and can be given along with lifestyle modification. अब इसके बाद एटलीस्ट इंडिया में जो अप्रूव्ड ड्रग्स हैं, वो भी वीगोवी अभी अप्रूव तो हो गई है, पर अभी अवेलेबल नहीं है इंडिया में, सेमाग्लोटाइड जो इंजेक्शन है. जहां तक बात है ओरल सेमाग्लोटाइड की, इट इज अवेलेबल, वी आर यूजिंग इट इन लॉट ऑफ आवर पेशेंट्स,
बट दैट इज एज येट नॉट अप्रूव्ड फॉर ओबेसिटी अलोन. अगर किसी को डायबिटीज विद ओबेसिटी है तो डेफिनेटली उनको आप बेनिफिट दें SGLT2 इनहिबिटर्स का, और सेमाग्लोटाइड का ओरल सेमाग्लोटाइड अवेलेबल है. पर अगर कोई सिंपल प्लेन एंड सिंपल ओबीस है तो भी हमारी कंट्री में अभी DCGI अप्रूवल फॉर ओरल सेमाग्लोटाइड इज नॉट देयर, बिकॉज सोल ट्रायल इज गोइंग ऑन विद ओरल सेमाग्लोटाइड इन ओबेसिटी. उसके रिजल्ट्स अभी आने हैं. सो उसको प्लेन एंड सिंपल ओबेसिटी में भी हम अंडर द गाइडलाइंस नहीं दे सकते. अंडर द गाइडलाइंस हम डायबिटिक्स को तो दे सकते हैं, ओरल सेमाग्लोटाइड देना भी चाहिए जिनको ज़रूरत हो. SGLT2 इनहिबिटर दीजिए. बट प्लेन एंड सिंपल ओबेसिटी में इंडिया में जो अप्रूव्ड ड्रग है वो ऑर्टिस्टेट है. बट देन देर आर मेनी अदर ड्रग्स विच वी डू यूज ऑफ लेबल समटाइम्स. अब जैसे मेरे पास कोई पेशेंट है जिसको डिप्रेशन है, तो उसमें आप स्मोकर है लेट्स से, तो उसको आप ब्यूप्रॉन दे सकते हैं. ब्यूप्रोपियन is a drug which helps in quitting smoking, also is a mild antidepressant, also decreases appetite. अगर कोई पेशेंट बाइपोलर डिसऑर्डर है या माइग्रेन है तो उसमें टोपिरामेट दे सकते हैं हम साथ में. इंडिया में भी फेंट्रामिन टोपिरामेट या बिप्रोपियन वगैरह की कॉम्बिनेशन DCGI की तरफ से अप्रूव नहीं है. सो आप उनको ऑफ लेबल यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऑफ लेबल यूज में इट्स नॉट रियली द बेस्ट आइडिया. बट मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे पेशेंट में कोई कोमॉर्बिडिटी है जो उसमें वो यूज की जा सकती है तो मैं उसको यूज कर लेता हूँ साथ में. जैसे माइग्रेन है या बाइपोलर डिसऑर्डर है तो टोपरामेट दी जा सकती है. सो दीज आर some of the drugs that are available. But the scene of anti-obesity medication is very, very promising. We have a great drug called tirzepatide, which is now available, uh, as yet not approved in obesity alone, but causes very good weight loss. Semaglutide injection, which is Wegovy, which is available all over the world. It is selling like hotcakes in US, etc. And soon we are also going to have it. So once it is available, we'll be using it more and more in our obese patients. And it is meant for obesity alone. It can be used. It is approved for obesity also alone. So that is the beauty of semaglutide and tirzepatide. These are some of the very new promising salts, and there are many more in pipeline, which we can talk if we have time. Yes. स्वप्ना जैन जी ऐड करती हैं कि अब अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड अबाउट चाइल्डहुड ओबेसिटी एज वेल, क्योंकि बचपन में ही ओबेसिटी स्टार्ट हो जाती है. तो सर आपका ओपिनियन इसके बारे में? आई टोटली एग्री विद यू. चाइल्डहुड ओबेसिटी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, और इसमें आई थिंक वी द पेरेंट्स आर द कल्प्रिट. द सोसाइटी इज द कल्प्रिट. हम लोग बच्चों को शुरू में तो मदर्स कहती हैं कि खाता कुछ नहीं है, एंड देन दे विल फीड हिम एनीथिंग. जंक फूड भी खिलाएंगी, कुछ भी खिलाएंगी, और फिर जब थोड़ा सा ओबीस हो जाता है फिर वो कहती हैं कि अब व्हेन द थिंग्स हैव ऑलरेडी वर्सन, बच्चे की आदतें भी खराब हो गई, आपने कोल्ड ड्रिंक भी पिलाया, सब कुछ पिलाया, और फिर आप उसको सुधारना चाहते हो. तो आई थिंक चाइल्डहुड ओबेसिटी में हमारी सोसाइटी, हमारी सिस्टम्स, अगर आप देखो पिछले 30 सालों में, 40 सालों में, जब हम बच्चे थे तो कोई चिप्स के पैकेट नहीं मिलते थे. देयर वाज नथिंग लाइक दिस, सो मेनी. Then came uncle chips and some other, so many types of chips came, so many types of packets came, cold drinks came back. Cold drink market was in limbo for many years from 1970 to 1985 or 90, and then all those multinationals have come, and believe me, all of them have played havoc with our health. Along with that, of course, I'm sorry, but we have to run away from, high calorie foods which are available in many of our sweet shop also, bakery and sweet shops. तो बचपन तो तो इम्पोर्टेंट हमारे है ही है. बच्चों को हम ये खिलाते हैं, फिर बाद में हम कहते हैं कि अब आप बेटा मत खाओ. पहले 15, 10, 12, 14 साल खिलाते हैं, फिर हम मना करते हैं. तो चाइल्डहुड ओबेसिटी 90%, 95% is because of bad lifestyle that we give to them. एक्सरसाइज ना करना और गलत चीजें खाना. जेनेटिक कंपोनेंट 5 to 10% में ही होता है. तो देते तो हम हैं, मतलब ये तो बात सही है, हम अपने बच्चों को ओबेसिटी देते हैं, बट वो जीन्स की वजह से नहीं है, वो एनवायरनमेंट की वजह से, और हम एनवायरनमेंट ठीक नहीं क्रिएट करते अपने बच्चों के लिए. सर, मैडम शुभलता चिटवाल हैज जॉइंड. शी इज अ सीनियर फिजिशियन फ्रॉम न्यू दिल्ली. अंशु सिंह जी पॉइंट आउट कर रही हैं दैट शी इज 55 years young and she has been an athlete.
but she continues to walk for 7 kilometers every day and she manages her diet properly. And that is why she is fit. सीमा जी कहती हैं कि लोगों ने अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है, तो अगर उसको थोड़ा-सा सिंपल कर दें, बेसिक कर दें, तो भी लाइफ आसान हो जाती है और सेहत बेटर रहती है। Dr. Vipin Bhandula is also logged in. He is a pediatrician from Kangra in Himachal Pradesh. And Nazakat साहब कहते हैं कि there are 6 prerequisites for a healthy lifestyle. This is from ancient Greek medicine. तो अली साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो 6 लिख दें चैट बॉक्स में। विन्नी जी बोलती हैं कि patients come to dietitians only at the end when other efforts have gone in vain. But I think Dr. Dang will say the same about his practice कि लोग एंड में आते हैं जब सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं. But it is a Herculean task actually for a So it dietitian. is actually a multidisciplinary effort in which dietitian is of course a very major pillar. Physician or endocrinologist, dietitian, and psychologist or psychiatrist in patients who are on these medicines. And I tell you, very, very important aspect is a lot of these patients are on drugs which cause a lot of weight gain. Olanzapine for that matter. I have seen patients gaining 10 kgs, 12 kgs. And moment you talk to your psychiatry friend and tell him कि इसकी जगह तुम कुछ और दे दो, एरिपेम्पटी दे दो या कुछ दे दो, तो मरीजों का वजन 5-7 किलो कम हो जाता है. So it is a multidisciplinary approach in which we all are part, and even surgeons, bariatric surgeons in certain category of patients are very, very important, because we all know that bariatric procedures are becoming less and less invasive, and some patients do need them. Yes. हमारे साथ लॉग्ड इन हैं सोनीपत से मिस्टर ललित कथुरिया. तो कथुरिया साहब भी एक फिटनेस एडवोकेट हैं एंड ही वॉक्स द टॉक. सो ही सेज ऑफ कोर्स इट इज टफ to sort of take care of your diet, but there are so many happy and healthy things that you can eat. You don't have to force yourself to eat uncle chips and chacha chips. डॉक्टर एन एस शारदा सर वही चीज कह रहे हैं, रिवर्सल फ्रॉम वेस्टर्नाइजेशन कि इफ वी गो बैक टू अ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, मोर सात्विक, अ मोर सिंपल लाइफस्टाइल, perhaps we can reduce obesity. And Yes. point out from Calcutta that जब चिल्ड्रंस डे भी होता है या बच्चों की पार्टी होती है स्कूल में, तो भी पिज्जा, पैटी, टेट्रा पैक्स ये चीजें दी जाती हैं. तो अगर टेट्रा पैक्स की बात करें सर, द जूसेस दैट वी ड्रिंक, आर दे हेल्दी or are they actually cause of disease? No, they are not healthy at all. They have a lot of sugar in them. They have preservatives in them. So we should not use, I say, even juices. Take the whole fruit. Juice में concentrated calories होती हैं. आप whole fruit खाएंगे, you will get the beauty of fiber. You will get the beauty of fruit. अभी हमने recently एक conference करी थी obesity पे, Midcon करके थी. It was on lifestyle and obesity, and one of our dietitians was Dr. She Khosla. She had come. She is an old friend of mine. We were together in Escorts 35 years back. And she was pleasantly surprised when I offered her fruits as a welcome, thing, rather than those packets or anything else. And we had dry fruits and fruits as welcome snack. So we have to change, and I think, and you know what gift we gave to our attendees, delegates, etc. We gave a resistance tube so that they could, so trying to give that message. And these cold drinks and juices are not healthy. Please stick to nature. Nature is the best. That's a nice thing. And actually, Kathuria साहब भी यही कहते हैं कि when my chachu gives me chips, I call him chacha chips. So he has stopped giving me chips now, and now he gives me cocoa to drink. So you can actually change things. And affection जो आपको दिखानी है किसी को, जो हमारा कल्चर है, जैसे डॉक्टर नरेश ने भी कहा कि मदर खाना खिलाती है, तो वो अफेक्शन दिखाने का तरीका है. बट देर आर अदर वेज ऑफ शोइंग अफेक्शन. And supposing you want to show affection through food, you can always show that affection through tasty and healthy food. जैसे whole fruits की बात की डॉक्टर साहब ने. सर एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए. अ, अ, ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट अगर आप ले लेंगे. दीपक कोई शर्मा नहीं, जी कोई के कोई प्रॉब्लम नहीं. बेटे को अचानक से घबराहट हुई. तत्काल हम लोग कार्डियो डॉक्टर के पास ले गए. छोटे शर्मा जी की एज तो बता दो दीपक भैया प्लीज. वहां पर डॉक्टरों ने नॉर्मल बताया. बच्चे के मुंह से ठंड और शरीर में ठंड महसूस कर रहे हैं, और जो भी खा रहे हैं वो कड़वा लग रहा है.
But we don't know the age of the child actually. So can you take this question, please? या एक्चुअली आजकल वायरल इलनेसेस बहुत चल रही हैं, तो मे बी इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ सम वायरल इलनेस. अगर ठंड लग रही है तो टेम्परेचर रिकॉर्ड रखें, और कोई हो सकता है वायरल इलनेस की शुरुआत हो, और जस्ट मैनेज इट दैट वे. बच्चा है तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनी सीरियस कार्डियक इलनेस यूजुअली इन दैट एज ग्रुप. और तो एंजाइटी ठंड एंड वायरल इलनेस, दीज आर टू पॉसिबिलिटीज. एंड ठंड में ठंड लगेगी तो डोंट वरी टू मच. या देसी नुस्खा दालचीनी डाल के दे दें दूध में बच्चे को, तो उससे थोड़ी सी हाँ. गर्माइश आ जाएगी शरीर में. Sir, another question is from Dr. Rujita Gupte. Uh, she walks for 3.5 kilometers every day, a brisk walk. She is following diet. She has hypothyroidism, but she is struggling to keep her weight under control. और कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है. तो थायराइड वाले जो लोग हैं, डाइट भी फॉलो हो रही है, एक्सरसाइज भी हो रहा है, तो इट इज अ ब्रिस्क वॉक एवरी डे. तो जिस तरह से हम बात करते हैं डॉक्टर नरेश डाइटरी डाइवर्सिटी की, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या एक्सरसाइज डाइवर्सिटी का या फिजिकल या फिटनेस डाइवर्सिटी का? So weight management is a very comprehensive approach. And weight management, weight loss, and weight loss maintenance, it is a continuum. ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने वेट लॉस कर लिया तो फिर हो गया, अब छोड़ देंगे, वो भी नहीं पॉसिबल है. सो आई ऑलवेज से दैट डाइट, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन. अब आप क्या डाइट फॉलो कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, बट आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करें. 500-600 कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पर डे रखेंगे तो आपका वेट लॉस होगा डेफिनेटली. Number two, let's say if you require 1800, consume anything between 1000 to 1200 calories. Number one. Number two, exercise. Exercise is very important, but exercise is going to give you only weight loss of 2 to 3 kgs usually. Or exercise is important for weight loss maintenance. More important for weight loss maintenance. But here I must add that exercise improves your inflammatory cytokines. So it does decrease the morbidity of atherosclerosis, diabetes, hypertension, etc. So diet and exercise both are important. Diet, I told you 500 to 600 kilocalorie restriction, maybe even more to start with, and later you can maintain it at that. And as far as exercise is concerned, brisk walk, yes. 30 minutes per day, 5 to 6 days a week is important. If you can increase it to 45 minutes, that'll be even better, because we, the Indians, need to work little more than the Europeans and the Americans, because, we are at a higher risk of every disease. So 30 to 45 minutes of walk, brisk walk every day, and 3 to 4 times you must do some resistance exercises also for 10 to 15 minutes. Then I think, and this kind of diet, you can achieve 5%, 7% weight loss easily. कैलोरी रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट. अली साहब ने भी ये कहा था कि पीपल लूज वेट समटाइम्स एंड देन दे गेन इट बैक. तो एक्सरसाइज का तरीका क्या है ताकि वो वेट लॉस में ही रहे और साथ में आपकी मसल्स बनी रहें, कि आपको मसल की वीकनेस ना हो, इसलिए एक्सरसाइज करनी होती है. एक क्वेश्चन आ रहा है भावना जी से, दैट इज अबाउट मेलाटोनिन. तो डज मेलाटोनिन हेल्प इन स्लीप मैनेजमेंट एंड कैन इट कॉज ओबेसिटी और इम्प्रूव ओबेसिटी? So melatonin is basically a circadian rhythm regulator, and yes, it can set a sleep rhythm into right pattern. So anything that will help your sleep rhythm will also help you to lose weight in the long run, and it can be used for a few weeks to few months, but don't make it a lifelong habit. शालिनी जैन जी पूछ रही हैं, इफ यू कैन टेक दिस 5.5 year old boy. Yeah, Height why is not? 110, yeah, height is 110 centimeter. Weight is 20 kg. Belly fat है थोड़ा सा. उनका कंसर्न ये है कि लोअर बैक पे डिंपल है, मतलब थोड़ा सा फैट है लोअर बैक पे. तो इज दिस नॉर्मल या हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए? सो ये बच्चों की जो ओबेसिटी होती है हम परसेंटाइल के हिसाब से देखते हैं कि वो किस परसेंटाइल में आता है. 95th में आता है, 99th में आता है. देयर आर डाइट्स, चार्ट्स अवेलेबल फॉर दैट एज ग्रुप. अब मेरे को कहना मुश्किल होगा, बट जिस तरह से आप बता रहे हैं कि थोड़ा बेली फैट है, थोड़ा डिम्पल फैट है, तो डॉक्टर को दिखाएं या डाइटिशियन को मिलें, बट हेल्दी लाइफस्टाइल विल हेल्प. आपने मेरे को ये बताया कि कोई ऐसी अदरवाइज माइलस्टोन डेवलपमेंट नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, बच्चा अदरवाइज
इंटेलिजेंट है और अदरवाइज हेल्दी है, तो कोई ऐसी कंजेनिटल जेनेटिक डिजीज मेरे को नहीं लग रही. It is more of, I think, lifestyle management will help this child. And yes, if you think you can't handle it, you should see a doctor and a dietitian. Make him, put him on good, healthy lifestyle, good diet, healthy diet the way we have talked, and all lots of salads, fruits, vegetables, some nuts, some carb restriction. Avoid cold drinks, juices, and avoid things from bakery and from junk food and from sweet shop. At least less. What I say, if you decrease the portion size, I know small child will be tempted, so give it little less often and decrease the portion size and adopt a healthier lifestyle. And I think you should be done. But yes, you should see a dietitian or a doctor nearby. जो सिंपलेस्ट इलाज होगा ना बेटे के लिए शालिनी जी की, वो होगा टू कीप अ फूड डायरी. आप एक्चुअली जो जो खाएं वो लिखते रहें. बच्चा उसी बहाने इंग्लिश, हिंदी, उर्दू भी सीख जाएगा. लेट हिम राइट, लेट हिम ही लर्न ड्राइंग ऑल्सो, लेट हिम ड्रॉ वट एवर ही इज ईटिंग. अरिथमेटिक सीख जाएगा. तो यू एट वन चपाती इन द मॉर्निंग, वन इन द आफ्टरनून, टू एट नाइट, तो टोटल काउंट करो. तो इफ यू मेक इट अ फन काइंड ऑफ एन एक्टिविटी, वो डायरी रखना, द बॉय विल लर्न लैंग्वेज, he will learn arithmetic as well, and he will learn a little bit of drawing, art and craft. Of course न्यूट्रिशन तो सीखेगा ही. The very fact of keeping a diary will ensure कि वो थोड़ा सा you feel as if you are under watch, कि somebody is watching you. तो उसी में at least एक तो पता चल जाएगा कितनी कैलोरीज जा रही हैं, and वो कम भी हो जाएंगी थोड़ी सी. तो and make it a fun activity, ये नहीं कि बच्चे को पनिश कर रहे हैं by keeping a diary, and you keep your own diary along with that. और फिर जैन साहब भी एक डायरी रखें अपनी, तो बेटे को तो फायदा होगा ही होगा, बाकी फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनको भी फायदा होगा. जो नजाकत जी ने 6 रूल्स बताए थे ऑफ एंशिएंट ग्रीक मेडिसिन. वन इज हेल्दी एयर. तो पोल्यूशन इज समथिंग वी आर ऑल फाइटिंग विद, स्पेशली इन एनसीआर एंड कलकत्ता. टू इज ईटेबल्स एंड ड्रिंक्स. तो अपने बेवरेजेस एंड फूड को सही मात्रा में सही तरीके लें. थर्ड इज फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी. तो मेंटल एक्टिविटी में आ गया टेकिंग केयर ऑफ स्ट्रेस एज वेल. फोर्थ इज फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट. तो अपने आप को आराम भी दें, फिजिकल एक्टिविटी करें, फिर रिलैक्स भी करें, मेंटल एक्टिविटी के बाद भी रिलैक्स करें. एंड फिफ्थ इज स्लीप वेक साइकिल. तो नींद अच्छे से लें. एंड सिक्स इज एक्सक्रीशन एंड रिटेंशन. सो सिंपल बावल हैबिट्स, यूरिन हैबिट्स, उनको भी फॉलो करना है. ललित साहब सोनीपत से, तो हरियाणा है तो घी की बात तो करेंगे. तो ही सेज होममेड लड्डू यू कैन मेक एट होम विद लेस घी. And if you're doing that, then you need 2 hours of physical activity as well. So you can eat traditional foods with less ghee, but make sure that the physical activity is taken care of. सीमा जी point out करती हैं that with hypothyroid you can lose weight, but अगर constipation or it becomes a bit tough, so you follow a healthy diet and then things are fine. Sir, one question coming from Vishwajit ji, that is he has diabetes, hypertension, stent भी डला पिछली अगस्त में. He is taking a combination of rosuvastatin 20 milligram, aspirin, clopidogrel. LDL बहुत अच्छा है, 48 है. HDL 22 पे आ गया. तो क्या मैं रोजुवास्टैटिन 20 को चेंज करके 40 करूं क्या? ये वैसे तो आपके LDL कार्डियोलॉजिस्ट को देखना चाहिए, लेकिन yes, 40 mg is the right dose for someone who already has proven heart disease. Number 2, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इंप्रूव रोजोस्टैटिन से नहीं होने वाला है. उसके लिए आपको लाइफस्टाइल में ही चेंजेस करनी पड़ेंगी. आज की डेट में जो मेडिसिन अवेलेबल हैं वो एचडीएल को यूजुअली इंप्रूव नहीं करती हैं. वी हैव सम मेडिकेशंस बट दे हैव हैड देयर प्रॉब्लम्स, niacinamide etc. But what I discussed with some of my dietitians, and what they say, that if you add colors to your diet, if you add 5 or 6 colors to your diet, different colors of food, I mean fruits हो गए, vegetables हो गए, red capsicum and blue green capsicum and yellow capsicum and different fruits, and साग खाएं, सब्जियां खाएं और नट्स लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो आपका, और स्ट्रेस कम लें, स्लीप सही टाइम पे सोएं. You know, you can improve your HDL cholesterol to some extent. There are other things which will improve, but I'm not going to talk about those. Red wine in small amounts natural, can improve HDL cholesterol, but I'm not recommending natural it. colors, yeah, natural colors actually. And Natural हम color. भी बच्चों को
दिखाते हैं इंडिया के फ्लैग में कितने रंग हैं, सो यूजुअली द आंसर कम्स एज 3, फिर दोबारा पूछो फिर आता है 4, देयर आर 4 कलर्स, तो उतने रंग होने चाहिए हर प्लेट में। Vinny Joglekar ji points out that for working mothers, it's difficult to cook, so you need cook-friendly recipes as well, which you can do in a hurry. And Dr. Dang has just pointed out, और कुछ नहीं तो capsicum ले लें. You use it as salad, and different colors will give you different types of minerals and vitamins. भावना जी का एक क्वेश्चन लेते हैं, and it's nearly 8 now, so we'll have to conclude. तो भावना जी सर पूछ रही हैं, eating the cake or the guilt after eating the cake, weight ज्यादा किससे बढ़ता है? Obviously, eating the cake. And, I would say, I'm not saying don't eat the cake. Take it, very small portion. So then it's okay. We say red flags. कि अगर आपने 3-4 दिन लगातार कुछ गलत खाया तो प्रॉब्लम है, बट अगर आप 15 दिन में एक बार स्मॉल अमाउंट ऑफ केक ले भी लेते हैं तो कोई इशू नहीं है. And other best practices coming up, if you take omega-3 rich foods, like some of the nuts, that will help increase HDL. याद रखें कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल किंगडम में पाया जाता है. There is no cholesterol in nuts. ऑयल होगा, जैसे देखो अब आलमंड ऑयल है, बादाम से भी तेल निकलता है, कैशू से भी तेल निकलता है, बट इट्स नॉट टू मच एंड यू आर नॉट गोइंग टू ईट 1 kg ऑफ नट्स. कोलेस्ट्रॉल जहां तक है, दैट इज जीरो इन नट्स. दिस वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई फॉर एवरीबॉडी. कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड ओनली इन द एनिमल किंगडम. तो अगर आप अखरोट को या बादाम को या काजू को घी में तलेंगे, घी इज एन एनिमल प्रोडक्ट, तो फिर कोलेस्ट्रॉल आएगा, बट अदरवाइज जीरो कोलेस्ट्रॉल है इन एनीथिंग फ्रॉम द प्लांट किंगडम. And Seema ji point out करती हैं that आंवला चटनी will help. So for homemakers who are busy, आंवला, गार्लिक, कोरिएंडर ये चटनी बना लें. कैप्सिकम सैलेड जैसे डॉक्टर नरेश ने कहा है वो कर लें. आंवला ये याद रखें कि इट इज हाईली पेरिशेबल, सो इट वोंट लास्ट अ लॉन्ग टाइम, बट आजकल आंवला है मार्केट में इन नॉर्थ इंडिया, सो टेक इट एंड ट्राई टू टेक इट फ्रेश. Amla vitamin C is also photosensitive, so if you keep it out to dry in the sun, much of the vitamin C will be lost. So try to take it as fresh as possible. स्वप्ना जैन जी थैंक यू कर रही हैं सर फॉर री reinforcing the need for teamwork, and together we can make a difference. Yes, yes. डॉक्टर एन एस शारदा सर अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं दैट यू कैन टेक ऑलिव्स बिफोर ब्रेकफास्ट, दो दैट वुड बी स्लाइटली एक्सपेंसिव फॉर इंडिया, बट अगर आप ऑलिव्स लेते हैं दैट आल्सो हेल्प्स इन वेट रिडक्शन एंड इन हेल्थ, हार्ट हेल्थ. Yes. सर एक क्वेश्चन बिस्वजीत जी से आ रहा है जिनका एलडीएल 48 था. कैन आई टेक एग योक? So, I mean, it is a debatable issue, but yes, you can take egg yolk if you don't have any cardiac issues. And one egg a day, whole egg a day, can be taken. So, 1980 to 2000 or 2010 was considered an era against fats. But now we don't think fats are that big a villain. So yes, if someone has high bad cholesterol, someone has proven ischemic heart disease, we will avoid cholesterol-rich diets. But with your kind of cholesterol, you can have egg along with yolk. एंड जो रूल्स थे सीमा जी के वो एक बार रीड आउट करते हैं. तो डॉक्टर डैंग वन बाय वन इफ यू कुड जस्ट से yes or no or an in Yeah, between yeah, answer. yeah. So Yes, yes. no refined sugar. Agreed. Our topic is obesity. Yes, yes. No refined No sugars. refined and processed food. Agreed. Totally. Yes. No Even fried obesity, diabetes, for anything, they are actually poison. Yeah. no fried food. Some amount of fried food, because we are so used to it, occasional is fine. And deep frying should be avoided. It is better if we sort them and take them. But occasional fried food is allowed. Chew your food properly. Very nice. True. I agree And totally. drink adequate amount of water. Yes, 2 to 3 liters of water every day is important. माइंडफुल ईटिंग, इसका मतलब क्या होगा डॉक्टर नरेश? ये सीमा जी ने सजेशन दी है. I totally agree with her. Actually, people who are fighting with their weight, they must plan their week's menu a week in advance and go to a sabzi mandi and buy the vegetables in bulk
uh, if you have if you plan your week and if you have foods ready for each day, then you can follow the idea of mindful eating and eat healthy. But if you want to do something in a huff, then you will pick up a packet of Maggi noodles, make it and eat it, and that is what will I say, uh, eating in rush. So mindful eating is eating healthy, planning it well, and something that will not give you the guilt that someone was talking about. So that is mindful eating. Yes. सीमा जी और कंटिन्यू करती हैं, अवॉइड ईटिंग और मिनिमम ईटिंग आफ्टर 7:30 पीएम. Yeah, actually, that is a concept which is accepted by a lot of people. But in short, what I'll say, calorie restriction, because in this era of time zones and people working at night, people working at day, odd shift hours, it is not possible for everyone to have that kind of lifestyle. Of course, that is great if you can have it. So, calorie restriction. If you want to maintain your weight, uh, be conscious eater, and eat little less than your hunger and eat healthy. Very very important. फास्टिंग 1 डे अ मंथ, प्रोवाइडेड कि डायबिटीज ना हो किसी को. जी. एंड देन हैव जो सबसे आसान है कहना, बट वी आर ऑल इन द सेम बोट. जिंदगी का सफर तो सेम है, हैविंग अ स्ट्रेस फ्री लाइफ सर. Yeah, yeah. At least avoid. Since you talk about Bhagavad Gita so much, I also talk about it. I'm not a great student, but I still follow a few things out of it. I tell my patients and I tell myself also, ki do your karma, and rest is not in our hands. So leave it to God. Do give your best, and that's it. Rest is not in बट our डू गिव hands. योर बेस्ट. या अपने आप And से then you ठगी will ना. not have that much stress. या एंड एक और चीज जो मैडम ने कही, सीमा जी ने, एक तो था ईटिंग मोर रॉ फूड व्हिच मींस लेस प्रोसेस्ड फूड, तो मोर रॉ फूड. एंड दूसरा Yes. प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ फूड. इसके बारे में बताएंगे सर बिफोर वी लॉग ऑफ. सीक्वेंसिंग ऑफ फूड, व्हाट टू ईट फर्स्ट, Yeah. व्हाट टू ईट लास्ट इन अ मील. Yeah, if you will fill your tummy with salads and fruits beforehand, then you will eat less of those carbs and roti etc. later. So yes, sequencing can you can have a glass of water beforehand, then you can have your salads and some fruit if you want to have, and then if you take your food, you will eat less. एंड नसरीन शेख जी जो सवाल पूछ रहे हैं और जो ललित कथुरिया साहब पूछ रहे हैं, वो है कि व्हेन वाचिंग टेलीविजन, व्हाट कैन वी ईट? पीनट्स, Munch on a चना. carrot, munch on a carrot or a radish. You can have bhunawa chana to some extent. You can have small amount of dry fruit, 15 to 20 grams, or maybe maximum 25 grams a day. But that's it. But then you must watch on your calories in case you're obese or overweight, because ultimately everything that you eat has calories. Other than these carrot and radish, etc., salads are something which you can have at liberty because they are very very low in calories. मूली, गाजर, खीरा, and all these are easily available. Yes. But thanks, Nasreen, for raising that question. And we'll end on this note from Rampal Puritiya ji, जो कहते हैं कि trust between a doctor and the patient is one of the major factors that impacts treatment outcome. चाहे obesity हो, चाहे diabetes हो. अगर हम trust ले आएं, the doctor is not judgmental. The doctor doesn't think it's the patient's fault. एंड द पेशेंट ट्रस्ट द डॉक्टर कि जो भी मेरे को सलाह दी जा रही है वो ठीक तरीके से और ठीक उद्देश्य के साथ दी जा रही है, देन सर्टेनली वील ओवरकम. एंड यही चीज डॉक्टर नरेश ने कही थी, फर्स्ट यू टेक कंसेंट एंड देन यू फॉर्म अ टीम टुगेदर. Yeah. सो विद दिस सर, इट्स बीन ग्रेट. इट्स बीन 1 आवर और टाइम का पता ही नहीं चला आपके साथ. सीमा जी पूछना चाहती हैं, हाउ मेनी पिन्नीज कैन आई ईट ऑन लोडी? I would say not more than one. I would tell you to, that is the problem. So I follow what I preach and I don't eat more than one. So I would tell you not to eat more than one. उसके दो हिस्से कर लेना सीमा, एंड देन यू ईट वन नाउ एंड देन वन लेटर. दो Yeah. हिस्सों के, so then you will Yeah. get that feel good kind of a feeling. Yeah. Yes. So it's actually been great, sir. People watching you today seems to be, Pratik is with us backstage. Today seems to be a very busy day. Huge live audience watching you. Any last Yeah. comment from your side, sir? So as I said, it's a team effort. We must change a lifestyle, and that is most important. And stick to nature.
Thank you. And Sanjay, you were a great host. We also have Riddhi Katyal with us, who thanks you for all your insights. And Thank you. she thanks you for making such a complex topic so simple. Pratik is with us backstage. Pratik, could we show a certificate of appreciation for Dr. Dang, please? Thank you. Thank you. Thank you. इसके साथ आप सबसे इजाज़त लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं केके में टॉक तो रोज़ होता है 7 से 8 बजे और मैं आपकी सेवा में होता हूँ हर सोमवार और हर वीरवार। So every Monday and Thursday, we are here and we talk about different aspects of health, of happiness, of harmony. And हमारा उद्देश्य फाइनली यही है, to achieve health, happiness, harmony, healing across our great nation. सबको लॉग इन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। केदार जोशी जी को वंस अगेन हैप्पी बर्थडे एंड डॉक्टर नेश सर धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। हरियाणवी में Yeah. थारा भला हो। जय Thank you. हिंद। Thank you so much. Thank you. Jai Hind. जय हिंद सर।